Hi, friends. Welcome to Kids of the Week. I'm so happy you're here today. Are you ready for some fun, learning, and amazing adventures? Today, we're going to explore our fun learning corner. Color me. Story time. Know the world. Crafty kids. Healthy habits. Let's learn with ABCs. Yay! A apple. B ball. C cat. D dog. E elephant. F fish. G goat. H hen. I ice cream. J jam. K kite. L lion. M monkey. N nest. O orange. P peacock. Cow queen. R rose. S sheep. T tiger. U umbrella. V van. W whale. X X-ray. Y York. Z zebra. Let's learn 1 to 20 counting. Yay! Let's count. Let's play. We'll count the numbers every day. Ready? Let's go! 1, 2, 3, and 4. Jump and count a little more. 5, 6, 7, and 8. Counting fast feels really great. 9 and 10, hooray, hooray. We've counted up, let's shout Yay! 11, 12, 13, 2. You're counting stars, look at you. Clap your hands and tap your toes. Counting helps your smart brain grow. From 1 to 20, come along. Let's all sing the counting song. 14, 15, 16 more. Knock, knock, who's at the door? 17, 18, 19, go. Now comes 20, way to grow. You did it, you counted through from 1 to 20, yay for you. Clap and smile, jump with glee. Counting's fun with you and me. Turn to learn healthy habits. Yay! Brush, brush, brush your teeth. Make them shine so bright. Up and down and all around.
Wash, wash, wash your hands with some soap and fun. Scrub the germs all away till the bubbles are all done. Healthy habits all day long keep us happy, keep us strong. This is the way we laugh and play, living healthy every day. Hooray! Eat, eat, eat your food. Veggies, fruits, so good. Crunch an apple, eat your greens just like you know you should. Run and jump and play outside. Get some sunny air. Move your body, stretch and leap. Show your health you care. Healthy habits all day long keep us happy, keep us strong. This is the way we laugh and play, living healthy every day. Hooray! Sleep, sleep, sleep at night when the moon is in the sky. Rest your body, close your eyes, let the sleepy moments fly. Healthy habits every day help us learn and grow and play. Healthy habits all day long keep us happy, keep us strong. This is the way we laugh and play, living healthy every day. Hooray! Do you know about states and their capitals? Let's learn it. Yay! The capital of Andhra Pradesh is Amravati. The capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. The capital of Assam is Dispur. The capital of Bihar is Patna. The capital of Chhattisgarh is Raipur. The capital of Goa is Panji. The capital of Gujarat is Gandhinagar. The capital of Haryana is Chandigarh. The capital of Himachal Pradesh is Shimla. The capital of Jharkhand is Ranchi. The capital of Karnataka is Bengaluru. The capital of Kerala is Trivandrum. The capital of Madhya Pradesh is Bhopal. The capital of Maharashtra is Mumbai. The capital of Manipur is Imphal. The capital of Meghalaya is Shillong. The capital of Nagaland is Kohima. The capital of Odisha is Bhubaneswar. The capital of Punjab is Chandigarh. The capital of Rajasthan is Jaipur. The capital of Sikkim is Gangtok. The capital of Tamil Nadu is Chennai. The capital of Tripura is Agartala. The capital of Uttar Pradesh is Lucknow. The capital of Uttarakhand is Dehradun. The capital of Mizoram is Azawad.
The capital of Telangana is Hyderabad. Did you know the capital of West Bengal? Today's story is about two big elephants who teach a very big lesson. एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत ही संकरा रास्ता था। वह रास्ता इतना पतला था कि एक बार में एक ही जानवर उससे गुजर सकता था। रास्ते के दोनों तरफ गहरी खाई थी। उसी जंगल में भोलू और गोलू नाम के दो हाथी रहते थे। दोनों ही बहुत ताकतवर थे और थोड़े जिद्दी भी थे। एक दिन भोलू हाथी रास्ते के एक छोर से आ रहा था और गोलू हाथी दूसरे छोर से। दोनों ठीक रास्ते के बीच में आकर एक दूसरे के सामने रुक गए। भोलू गुस्से में बोला, गोलू पीछे हटो, मुझे पहले जाना है। गोलू भी अकड़कर बोला, क्यों हटूं? मैं तुमसे बड़ा हूँ, रास्ता मुझे मिलना चाहिए, तुम पीछे हटो। दोनों में बहस होने लगी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं नहीं हटूंगा। भोलू ने कहा। मैं भी नहीं हटूंगा। गोलू ने जवाब दिया। गुस्से में आकर दोनों ने एक दूसरे को धकेलना शुरू कर दिया। उनके धकेलने से पूरा रास्ता कांपने लगा और किनारे से मिट्टी खाई में गिरने लगी। तभी भोलू को अपनी माँ की सिखाई हुई एक बात याद आई। बेटा, ताकत से बड़ी समझदारी होती है। भोलू तुरंत रुक गया और बोला, दोस्त गोलू रुको, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम दोनों ही इस गहरी खाई में गिर जाएंगे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। गोलू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, तो फिर हम क्या करें? भोलू ने समझदारी दिखाते हुए कहा, देखो, मैं धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट जाता हूँ ताकि तुम्हें निकलने की जगह मिल जाए। जब तुम यह रास्ता पार कर लोगे तो मैं भी आराम से निकल जाऊंगा। गोलू को भोलू की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो दोस्त, लड़ने में कोई फायदा नहीं। फिर भोलू हाथी धीरे धीरे और सावधानी से पीछे हटा। गोलू आराम से रास्ते से निकल गया। उसके बाद भोलू ने भी रास्ता पार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चले गए। शिक्षा, लड़ाई और जिद से हमेशा नुकसान होता है। समझदारी और सहयोग से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। That's all for today's magical journey. See you soon in the next adventure. Thanks for joining us, friends.